again. तो क्या कर रहे थे हम लोग? वी स्टार्टेड जायरो कंपास. क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? क्या समझा था? जायरोस्कोप. जायरोस्कोप चीज क्या होती है? रोटर, spin axis suspended within a system of rings called gimbals. The gimbals are arranged at 90 degree in such a way that the whole assembly, the rotor is basically free of outside world. The outside world can move in any direction, and the rotor is not constrained in any way from outside world. तो आपने प्रैक्टिकल मॉडल देखा था उसका, फ्री जायरोस्कोप का? देखा या नहीं? देखा ना? So this is what you had seen. The rotor is free from any side. If I want to turn it like this, the outside world is changing, nothing happening to the rotor. It is going like this. In any way it goes, kahin bhi jaye, rotor is free from any external constraints. That means rotor in a way can move like this about the spin axis. Ye ghum raha hai. About the spin axis it can rotate. It can rotate about a horizontal axis. Horizontal axis. About the horizontal axis, and it can also rotate about a vertical axis. So that's a free gyroscope. Any questions? What is a free gyroscope? एक डाउट है सर. तो जैसे आपने बताया कि बीच में एक हेवी मास होता है जो बेसिकली रोटर होता है, जो घूमता रहता है और जो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है. सर उसको इतना हाई आरपीएम कैसे देते रहते हैं कंटिन्यूअसली? मतलब सिस्टम में कुछ तो फ्रिक्शन होगी, कुछ तो लॉसेस होंगे. हाई आरपीएम कैसे दे सकते हैं? यस सर. हाई आरपीएम मोटर से. हाई आरपीएम का मोटर लगा दिया, चलती रहती है, उसमें पावर है. जैसे पंखा कैसे चलता रहता है, ठीक है, स्लो आरपीएम पे है, डिजाइन फॉर स्लो आरपीएम. उसका पंखे का आरपीएम 300 होता है. बट वी हैव इंजन्स, फॉर एग्जांपल इंजन्स रनिंग एट 6000 आरपीएम. वो मैकेनिकल है, कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी, combustion, chemical reaction into mechanical energy. We are converting that वहां पे. But we have different kind of motors. आपके जो आपने एंगल ग्राइंडर यूज किया है जहाज में? यस सर. आरपीएम कितना होता है? मोटर ही तो है. कितना आरपीएम होता है? सर काफी होता है वो तो. काफी होता है, 14,000 आरपीएम. तो 14,000 हम 300 से 14,000 पहुंच सकते हैं, तो 20,000 ना पहुंच सकते क्या? नहीं सर, वो नहीं, वो तो पहुंच सकते हैं सर. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपने वो प्रैक्टिकल जो दिखाया सर, उसमें ये मोटर मैकेनिकल है. ये वाला तो डेमो के लिए है, तो इसको मैं हाथ से घुमा रहा हूं. आई कैन इंक्रीज द आरपीएम, जो मैं हाथ से घुमा के दिखा रहा हूं. बाय अप्लाई, अभी इतना घूम पाया. बाय अप्लाइंग सम मोर मेथड आई कैन इंक्रीज दिस. इफ आई improvise, so using some method I can increase the RPM here by applying some mechanical method. अगर मोटर लगा दिया इसमें, मान लो कि एक मोटर लगा दिया, तो this can go to whatever RPM it is designed for. तो मोटर होती है. आपने स्लाइड्स देखे थे? स्लाइड्स नहीं देखा था मेरे ख्याल से ना. जायरोस्कोप पे स्लाइड्स नहीं अभी तक खोले हमने. नहीं सर. नहीं. नो सर. तो उसमें आपको अरेंजमेंट दिखेगा, उसमें काफी सारे केबल्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपास होता है. तो बेसिकली इट इज मोटराइज्ड, रन एट हाई आरपीएम.
So Thank free you, sir. gyroscope. Any other question? Any other question so far? Okay. No. Did we talk about something called torque, angular velocity, angular momentum? नो सर, नो सर, ठीक, इनर्शिया के बारे में बात हुई थी। इनर्शिया के बारे में बात हुई, तो इनर्शिया से तो मोमेंटम निकलता है। इनर्शिया हमने एक्सप्लेन किया था, समथिंग अ बॉडी टेंड्स टू retain its state of rest or motion, that's inertia. Inertia is measured by momentum when it is moving, or weight like mg, mass and gravity multiplied, छोटा मास ग्रेविटी वही, तो उसका स्टैटिक इनर्शिया mg which is basically force is static और कम होता है। बड़ा मास ज्यादा मास हो गया, ग्रेविटी ज्यादा होता है, तो हिलाने के लिए छोटे पत्थर को हिलाना आसान होता है, इनर्शिया कम है, बड़े पत्थर को हिलाना मुश्किल होता है, ज्यादा इनर्शिया होता है, दैट इज स्टैटिक इनर्शिया mg. But when it is in motion, mass is in motion, then we have linear momentum or inertia in motion, which is measured by mass into velocity. तो यहाँ पे भी डेफिनेटली देयर इज इनर्शिया, उसी के चलते तो घूम रहा है अभी तक घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। So it is also because of inertia, but here we call it gyroscopic inertia because it is a gyroscope, rotary motion, so it is gyroscopic inertia, and that inertia is measured by angular moment. In normal case, a mass moving in a straight line, velocity and mass. Here, angular velocity and mass. So angular momentum must relate to its mass and its angular velocity. What is angular velocity? शायद हमने define किया था। Angular velocity is basically the RPM. आप ही ने बताया था मुझे, revolutions per minute. So angular velocity is basically measure of the angle swept by the radius in unit time. एक unit time में, let us say 1 second, how many degrees it is covering, that is angular moment. Angular velocity. So it can be degrees per second or radians per second, which is also a measure of angle. कोई define करेगा मेरे लिए? What is 1 radian of angle? चलो रेट ऑफ टर्न जब बात करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंगल है इतना जान लेते हैं, रेडियंस एंगल, डिग्रीज एंगल. So how much of angle covered by swept by the radius of a rotating body in a unit time is angular velocity, denoted by omega. Looks like W, but Greek word called omega. So we'll go on the board to further discuss about this. A gyroscope exhibits certain behavior. The properties of gyroscope or free gyroscope. There are 2 properties. Both of these properties are going to be used in making this gyroscope, a free gyroscope, in a compass, into a compass. So अभी जो फ्री जायरोस्कोप था, जो कहीं भी घूम सकता था, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जब कंपास में, तो इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. What are those properties? Number 1 on the board. So the properties of FGS
is free gyroscope. Free gyroscope, in short, we write FGS. Has got two properties, something called gyroscopic inertia also referred to as rigidity in space. The second property is called precision. Precision. This is not precision. Precision accurate वाला precision नहीं है ये, जो हमने बात किया था जीपीएस में भी बात किया था, जैसे डीओपी बोलते थे प्रिसिजन, वो प्रिसिजन नहीं है, प्रिसेशन है. It's a different word altogether. We will talk about each of them separately. First, the gyroscopic inertia. Gyroscopic inertia, we have already understood and discussed that when we rotate the rotor, एक बार turn करने लगता है, तो it keeps on rotating continuously. If there was no friction, then it will continue to rotate indefinitely. We have taken a case of Earth going around the sun for millions of years, maybe billions of years, we don't know. Scientists will know, I don't. The rigidity or the gyroscopic inertia is the property due to which the plane of the rotor maintains its orientation, and hence the spin axis also maintains its orientation in space. Rigidity says that when I turn it, the plane of the rotor, this is the plane of the rotor now, plane of the rotor will continue to move in the same plane, and so the spin axis also will remain fixed in the same direction. मैंने टर्न कर दिया, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, लेकिन ये घूम नहीं रहा. क्यों? Because it is fixed, it is having gyroscopic inertia. Inertia says जो ये कर रहा था वैसे ही करता रहेगा, तो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है तो रोटेट करता रहेगा, और ये टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितना इसमें इनर्शिया हो. अभी रोटेट कर रहा है या नहीं, अभी रुका हुआ है. When it is stopped, there is no gyroscopic inertia. That means when I turn it, it goes along with me. But if I turn it and provide gyroscopic inertia to this, if it has gyroscopic inertia, then it will try to maintain its orientation. तो ये तो हमने ये कर दिया. Now it does not have so much of inertia. Thank you. It does not have so much of inertia, so I need to provide more inertia to see its behavior more clearly. So what I do, I have an arrangement made for giving it a high RPM. We will give it high RPM so that I can rotate it faster. One moment. So I am winding a thread over this drum. I am winding a rope over this drum so that I can pull it and give high RPM. High RPM means velocity is more. So velocity more, mass तो fixed है.
high velocity will provide more inertia, and that tendency will remain more. To remain in the fixed direction, that tendency will become enhanced. So, going there, this is what I do. Now it is turning at a higher RPM. I turn it like this, does not move. I move it like this, it does not move. It is maintaining, जो हाथ हिल रहा है थोड़ा सा उसके चलते हिल रहा है, but it is maintaining its orientation. मैं किधर भी लेके जाऊं, it is not moving. उसका प्लेन वैसा ही है. जो थोड़ा बहुत हिल रहा है, it is because there is some friction which tries to catch it. Not perfect. So this is basically the tendency. Gyroscopic inertia is the property due to which the plane of the rotor maintains its orientation, and hence the spin axis also keeps on pointing in the same direction. And because of this, the spin axis is rigid in space. When I was doing that, it was fixed in that direction or not? It was rigid in that direction? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. था. So that's rigidity in space. So gyroscopic inertia के चलते rigidity आती है. जितना inertia होगा, उतना ज्यादा rigid होगा. जैसे अभी कोई inertia नहीं है, मैं इसको move करता हूं तो move हो जाता है साथ में. जो थोड़ी सी friction थी, वही friction इसके लिए काफी है और ये move हो जा रहा है. But when it was rotating at high RPM, what was happening? It was maintaining its orientation. That's rigidity in space. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर. Go ahead. सर मेरे शिप पे एक इंसिडेंट हुआ था सर. उसमें जायरो फेल हो गया था सर. उसका सेंसिटिव एलिमेंट डैमेज हो गया था. हम लोग पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे, अमेरिका से जापान आ रहे थे सर. तो उसमें बहुत रफ वेदर हम लोग को मिला था, बहुत ही ज़्यादा. बिफोर 8-9 मिला था सर. तो सर क्या सर, जैसे आपने बताया मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर ही अपना डायरेक्शन मेंटेन करता है फ्री जायरोस्कोप. लेकिन सर वो जो फेल हुआ था वो रोलिंग की वजह से हुआ था सर. तो व्हाट वाज द रीजन, मतलब आप इसको क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? रोलिंग की वजह से हुआ था, बेसिकली जो जायरो कंपास है, हमने इसको यूं तो नचा दिया, यूं नचा दिया, लेकिन अगर देखो तो इसके और इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं? इस रिंग और इस रिंग के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं? यस सर. हो रहा है सर. तो सेंसिटिव एलिमेंट कुछ ऐसा स्प्रिंग वगैरह होता है जो इसके मूवमेंट से स्ट्रेच होता है, और व्हेन इट इज स्ट्रेचिंग बिकॉज ऑफ दिस, तो इससे एक करेक्शन होती है जिससे ये नॉर्थ की तरफ जाता है. आगे आएंगे, थोड़ा क्लियर होगा. बट जो स्ट्रेच हो रहा है ये या तो नजदीक जा रहा है या दूर जा रहा है, उसके चलते ये जो एलिमेंट, सेंसिटिव एलिमेंट, उसमें एक्सपेंशन या कुछ होती है जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है और उससे करेक्शन होती है. करेक्शन से हमारा कंपास नॉर्थ की तरफ देखता है. अब ये ज्यादा हो गया तो प्रोबेबली इट कॉज्ड डैमेज. ओके सर, ओके, समझ में आ गया सर अभी. ठीक है ना? जहाज खूब ऐसे ऐसे कर रही है, इसमें खूब नाच रहा है ये, तो ये थोड़ा थोड़ा होना चाहिए. अभी आगे हम और समझेंगे कि ये जो मूवमेंट होनी चाहिए इसमें, वो होती है, कैसे होती है आगे देखेंगे. बट इफ इट इज टू एक्सेसिव, for which it is not designed, it is not designed for aircraft where the aircraft is going to go like this, वो कभी ऊपर ऐसे आएगा, डाइव मारेगा, उस केस के लिए ये डिजाइन नहीं है, तो हो गया गड़बड़. Possibly that could be the reason. ठीक है? तो ये सेंसिटिव एलिमेंट जो आपने नाम लिया, वो किसी पर्पस के लिए होता है. देयर इज अ स्पेशल पर्पस फॉर दैट, समथिंग कॉल्ड डैम्पिंग. आगे आएगा, 5-6 क्लास के बाद बात करेंगे उसके बारे में. ठीक?
ओके सर, अभी क्लियर हो गया सर। Right. So now we said gyroscopic inertia causes the spin axis to be fixed in space, rigidity in space. How do we measure this gyroscopic inertia? पत्थर था छोटा, बड़ा, तो हमने मेजर कर लिया मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। इसमें ज्यादा एनर्शिया है, इसमें कम एनर्शिया है। इसको हिलाने के लिए कम फोर्स चाहिए, इसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ज्यादा एनर्शिया, ज्यादा फोर्स, कम एनर्शिया, कम फोर्स। जब साइकिल आ रही है उसको रोकना है कम एनर्शिया, क्योंकि लाइट हल्की है तो साइकिल आराम से रुक जाता है थोड़ा फोर्स लगा के। बट कार आती है उसी वेलोसिटी से तो मैं नहीं रोक पाता, ज्यादा एनर्शिया है उसमें। बट उस एनर्शिया को साइकिल और कार को हमने कैसे मेजर किया था? MV. MV, momentum. So here also must be something related to momentum. What we call is angular momentum. Angular momentum is the measure of gyroscopic inertia given by H is equal to I omega. This I relates to its mass and mass distribution. This I is known as moment of inertia. Moment of inertia is I, which depends on mass and mass distribution. I करेंगे बात इसके बारे में. This is angular velocity. So the gyroscopic inertia can be measured by angular momentum h, which is given by I omega. We have understood that, okay, not understood, but we have referred that it is about the mass. So here is mass basically and angular velocity. Mass into velocity is angular momentum. So how to understand this meaning of mass and mass distribution? To understand that, let us have three cases. I make a rotor and I'm seeing it from the front side, one side. So it looks like this to me. The spin axis is like this and it is rotating like this. So rotor you are seeing like this. I design another one with little different design. Here is the axis once again. Design number 1, design number 2, and design number 3 also. I make another design which is something like this. All have got the same mass. All of them are having same mass. All of them have the same radius. And all of them are moving at the same angular velocity. Same mass, same radius, same velocity, angular velocity. Now suppose if it was running, let us say at, let us say 2000 RPM, for example,
एंड इफ यू वांट टू स्टॉप इट, ग्लव्स पहन लीजिए और पकड़ के उसको रोकना चाह रहे हैं। केस 1, 2, 3 अगर सब उसी 2000 आरपीएम पे घूम रहे हैं, इसको रोकना आसान होगा, इसको रोकना आसान होगा, या इसको रोकना आसान होगा? यू कैन टेल मी 1, 2, 3 के बीच में द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, whether it is going to be same in all of them or it will be different. So you can tell me from minimum to maximum in cases 1, 2, 3 which one requires more force if at all. अगर सेम है तो बात ही खत्म। अगर डिफरेंट है तो how they are different, which one is maximum and which one is minimum? So is it 3, 1, 2? You said 3, सेम ही होना चाहिए। 1 and 2. सेम ही That होगा means minimum is 3 and 2 is maximum. Okay, we have vote for something same force required. One vote is this, one vote is this. Any more inputs? Some people agreeing with this, some people agreeing with this, some people not agreeing with both of these. Okay, compared to this, if I had a rotor जिसका साइज छोटा होता तो इसको रोकना आसान होता है, या बड़ा अगर रिंग होगा तो उसको रोकना आसान होगा? छोटे को। छोटे मतलब जो मेरी गो राउंड होता है, तारा माचिस जिसको बोलते हैं, मेले में चलता है, वो धीरे धीरे घूम रहा है, उसको रोकना चाहेंगे तो रोक पाएंगे, या इतना छोटा सा व्हील होगा वो घूम रहा होगा उसको रोकना आसान होगा? कंपैरिजन बहुत बड़ा दे रहा हूं तो सोचना आसान होगा कि छोटे वाले को रोकना, जितने धीरे धीरे वो घूमता है या तेज घूमता है जो भी तारा माचिस, उसी आरपीएम पे छोटा घूम रहा हो तो छोटे को पकड़ना आसान होगा या बड़े तारा माचिस को? छोटे को। छोटे। Here the mass of this rotor, this side is centered here. इतने के बीच में अगर देखें तो center of gravity of half part is here. Here the half part or the center of gravity is here, and here the center of gravity of half part is here. So effectively, if you see, the radius of this rotor is this much, it is this much, and it is this much. Although the radius, physical radius was same, effective radius is different here. It is, so to say, the biggest wheel, this is the medium size wheel, and this is the small size wheel. Although the masses are same, because of distribution of the mass, it behaves as if it is 2, it is 1, and it is 3 in the sense of size. So now you tell me, बड़े व्हील को रोकना आसान है या छोटे को रोकना आसान? ऊपर से जा रहा है, छोटे को रोकना सर, छोटे को 3 वाले को रोकना आसान सर। 3, 1, 2 सर। so minimum is 3, very right. उसके बाद 2 because it is medium size, उसके बाद 1, and finally the 2 because it is the biggest wheel actually. So this is the effective radius of this. So mass distribution, there are so many particles here which are having longer range, radius, and so much particles which are having shorter. So center of gravity is here.
And so, mass being the same, the distribution of the mass made all this different, as if these are different size of vessels. Sorry, wheels, vessels. So coming back to that momentum, where we saw H is equal to I omega. I, we said, is called moments of inertia. Remember that when a force is applied at a distance d, then it creates a motion, creates a moment, turning force. So it was moment basically, but it is since already in motion, इसके मास के चलते एक इसमें ये पार्टिकल है, मान लीजिए यहां से इतना दूर है, it is already in motion. So right now it has got a tangential velocity vector already moving, which is basically force because it is in motion. यहाँ से इतना distance है अगर दूर, so it is creating a kind of moment which combined for all the particles in the whole of the rotor causes moments of inertia for each of them. अगर ज्यादा वेट बाहर की तरफ होगा तो ज्यादा मोमेंट्स यहाँ पे होंगे, कम भीतर होगा. अगर हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यहाँ पे ज्यादा मास है तो ज्यादा मोमेंट्स यहाँ पे ही होंगे, यहाँ पे कम होगा, इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगा. This moment of inertia is then given by I is equal to mr square by 2. This is the mean radius. जो तीन केस हमने बात किए थे, तीन केस बात किए थे, this was r, this was r. This was the mean radius. Here the mean radius was more. This is mean radius of the object or the rotor. So now you can relate here. The case number 2 was having minimum radius. Case number 1, case number 3 was having minimum radius. Case number 1 was having medium radius, and case number 2 was having maximum radius. So maximum moments of inertia, that would give maximum momentum, and so the amount of force required to stop the middle rotor was more. कुछ पल्ले पड़ा के सब ऊपर से निकल गया? यस सर, क्लियर है. क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग? सर ये mr स्क्वायर बाय 2 में जो r है सर, ये इफेक्टिव रेडियस है, राइट? इफेक्टिव रेडियस है. हमारा इतना रेडियस था, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी तो ये रेडियस हो गया. जब हमने उल्टा किया था कंस्ट्रक्शन को, सेंटर्ड कर दिया था मास को और इसके नजदीक, तो रेडियस छोटा हो गया था. जब बाहर की तरफ कर दिया तो रेडियस बड़ा हो गया था. जो तीन केस लिए हमने, तीन केस में हमने अलग अलग रेडियस देखे. दैट अलग अलग रेडियस वाज द मीन रेडियस ऑफ द मास, बेसिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन. कि ज्यादा मास बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ. जहां पे ज्यादा मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दैट मीन रेडियस. यस सर, करेक्ट. So why do we require H? What is the relevance of H? It is measuring gyroscopic inertia. The H, angular momentum, measures gyroscopic inertia. What does the gyroscopic inertia do? Provides what kind of property to the gyroscope? Rigidity. Rigidity. Yes, very good. So basically rigidity comes from gyroscopic inertia, which is measured by the angular moment.
Concept clear? Yes, sir. Good. So rigidity in space, talking about the definition, what does it mean? It is the property of a free gyroscope due to which the plane of the rotor maintains its rotation, Yes, sir. orientation, and hence the spin axis also keeps rigid in space. That's Same. rigidity. This rigidity in space comes about by way of gyroscopic inertia, which is basically the tendency of an object to retain its state of motion or rest, which in our case, in case of free gyroscope, is measured by its angular momentum, and that angular momentum h is given by I omega, which is basically product of moments of inertia and angular velocity. Moments of inertia depends on mass and its distribution in the rotor. Clear? Yes, sir. Clear. Next is precession. Precession is basically we are studying effect of torque. What is torque? Rotational force. Rotational force. If a force is applied on an object which is free to move about a fulcrum, basically point of rotation axis, if I apply a force here, it rotates. That force at a distance d is referred to as torque. Moment basically, but torque, turning effect. So before we go into discussion of this, I would like you to show this and try to find out some behavior, and then we relate it with this property called precession. So here again, right now it is like this. The spin axis is horizontal or not? Yes, sir. If I try to push the spin axis down, am I applying a torque in the vertical direction? So yes, sir. If I try to push it down, is it not moving about a horizontal axis? Yes, sir. If I put a horizontal torque on the spin axis, does it not move or rotate about a vertical axis? Correct, sir. So if I am doing this, it is going like this. Okay? Vertical torque, the spin axis moves in vertical plane. जब मैंने यूं दबाया तो ये ऊपर या नीचे हो रहा है, ठीक है? अगर हमने यूं किया तो हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के साथ वर्टिकल, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मोशन. Are we good or not? Yes, sir. All right. What if it is rotating? Will it show the same behavior? Is it expected that when it is rotating and I apply a force here, it should move like this? Correct or not? If I apply a torque here, when rotating, it is having gyroscopic inertia, then it should go like this.
when I apply a vertical torque, it should go like this. If I apply a horizontal torque, it will go like this. Is it expected, or do we have any disagreements? सर होता है कुछ रेजिस्टेंस आती है उसमें, ऐसा कुछ होता है, इफेक्ट होता है कुछ उसका होता है. All right. So let us do this exercise and see what happens when it possesses gyroscopic inertia and how it behaves when I apply a torque. In vertical plane, then what is the reaction by this? And in horizontal plane, then what is the reaction to this? So for that, we need to rotate it at high RPM once again. High RPM will give us the effect in much better way, because without rotation, no gyroscopic inertia, and we can't see the results properly. So here we go. Watch out very clearly. Be observant, see what you are seeing, and tell me what is your observation. I will just do some action. A vertical force I will apply a horizontal torque, and there will be a behavior. You have to just tell me what you are seeing, not why. I'm not asking why it is happening. I will explain why. But you'll just tell me what you are seeing. There we go. Okay. So here it is rotating, and I apply a vertical torque. I am applying a vertical torque. नीचे से लगा रहा हूं, नीचे से लगा रहा हूं तो ऐसा, ऊपर से लगा रहा हूं तो ऐसा. When I try to apply a horizontal torque, I am applying this torque, horizontal torque. And then I apply a vertical torque. What did you see? सो वर्टिकल टॉर्क लगाने पे वो अपने वर्टिकल एक्सिस पे घूम रही है, एंड हॉरिजॉन्टल टॉर्क लगाने पे वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रही है. एक्सिस पे घूम रही है, मतलब जब हमने इसको यूं घुमाने की कोशिश की तो वो ऐसे घूम रहा था. करेक्ट? यस सर. और जब हमने उसको यूं घुमाने की कोशिश की तो वो ऐसे घूम रहा था. सर वो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है खुद को अपने अलाइन करने की कोशिश करता है सर ये. एक्सप्लेन. सर एक्सप्लेन कैसे करूं? एक्सप्लेन करो. अलाइन का मतलब क्या है? किसके साथ अलाइन कर रहा है? क्या अलाइन कर रहा है? सर ये मीन्स खुद को मतलब शायद नॉर्थ पोजीशन के साथ अलाइन करता होगा, कुछ करता होगा सर. यहाँ खड़े हुए नॉर्थ किधर है? मुझको क्या मालूम नॉर्थ उधर है कि उधर है कि उधर है कि ऊपर है कि नीचे है? आई डोंट. राइट नाउ वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ नॉर्थ. डिड वी? मैग्नेटिक नॉर्थ को करता होगा. खबरदार, पिटाई खाओगे. मैंने कहा कि इट इज अ नॉन मैग्नेटिक डिवाइस. अभी हम मोशन बात कर रहे हैं. मैग्नेटिज्म कहाँ बात की हमने? सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. पहली क्लास में बोला था इट इज अ नॉन मैग्नेटिक डिवाइस. बोला था या नहीं? बोला था या नहीं? वन मोमेंट प्लीज. क्या है ये? आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर. Okay. Yes sir. So it is a non-magnetic device. Right now,
nothing to do with north, nothing to do with magnetism, all to do with its motion and the torque applied and its reaction. That's all we are talking about. मैंने इसको यूं घुमाने की कोशिश की तो ऐसे नहीं घूम के ऐसे घूम रहा था, जब यूं घुमाने की कोशिश की तो ऐसे घूम रहा था. Is it getting deflected at 90 degree to the applied torque? Force applied like this, it was rotating like this. Yes sir. फिर से दिखाऊं? Correct. फिर से दिखाऊं? Yes sir, दिखाओ sir. Second observation. पहली बार नहीं पकड़ में आया, हो सकता है. If we see it next time, once again, it is possible that we can capture the fact. All right. So once again, applying a torque like this, applying a torque like this, थोड़ा अगर इसको बढ़िया से दिखाऊं तो वर्टिकल प्लेन में लगा रहा हूं मैं. ये वर्टिकल प्लेन में मैं लगा रहा हूं, ये ऐसे घूम रहा है या नहीं? मैं इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर दबाता हूं तो ऐसे घूम रहा है, हो रहा है या नहीं? Yes sir. और जब मैं इसको यूं घुमाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं ज्यादा जोर से लगा दूं तो कैसे घूम रहा है? मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, ऐसे घूमना चाहिए था, इसको ऐसे घूम रहा है, ऐसे. So when I applied a torque like this, it moved like this. Yes or no? Yes sir. When I applied a torque like this, it went like this. Yes or no? Yes sir. What you observed was precession. What you observed was precession, angular deflection of the spin axis when a torque is applied on the spin axis. The spin axis moves in a direction perpendicular to the applied torque. That's precession. If I did not apply torque, precession होगा क्या? अगर मैं टॉर्क नहीं लगाया तो प्रिसेशन होगी क्या? नहीं होगा. डिफ्लेक्शंस होंगे? नहीं होंगे. नहीं होगा. थोड़ा सा टॉर्क लगाया, No, sir. छुआ सिर्फ, थोड़ा सा छुआ सिर्फ, तो होगी क्या? Yes sir. थोड़ा होगा. ज्यादा टॉर्क लगाया तो ज्यादा मूव करेगी. Correct. So precession is directly proportional to torque, correct or not? And if it was rigid, very rigid, खूब angular velocity खूब ज्यादा है, mass heavy ज्यादा है, तो फिर हिलना नहीं चाहेगा, rigid रहना चाहेगा. मैं थोड़ा सा लगाऊंगा तो हिलेगा नहीं, और थोड़ा लगाऊंगा फिर भी नहीं हिलेगा. ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा तब हिलेगा. जितना rigid उतना कम प्रेसेशन होगी. Yes sir. Correct. That means precession is inversely proportional to angular momentum h. Correct or not? सही है sir. So P is basically, they can be taken as T by H
for small angles of deflection. Precession is basically angular deflection of the spin axis under the influence of torque applied, and the spin axis moves in a direction perpendicular to the torque applied. Not only angular, but perpendicular to it. The precession is directly proportional to torque applied. जितना torque लगाएंगे उतना precession होगा. Precession is inversely proportional to angular momentum. जितना angular momentum ज्यादा होगा, जितनी rigidity ज्यादा होगी, उतना कम precession. Are we good? सर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए? नहीं, कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये फॉर स्मॉल एंगल्स दिस कैन बी ट्रू विदाउट एनी कांस्टेंट्स. फॉर स्मॉल एंगल्स थोड़ा के लिए इट कैन बी टेकन एज डायरेक्टली इक्वल. यू डोंट नीड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हमें तो यहाँ से एक ग्राफ में शुरू करना होगा. पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी. मतलब यहाँ पे एंगल अगर है, यहाँ पे टॉर्क है, तो कितना टॉर्क लगा रहे हैं, कितना प्रेसेशन हो रहा है, वो करना पड़ेगा लंबा चौड़ा. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही में बात करते हैं, इतना ही है तो इतना ही. सही है सर. तो हमारा स्टडी जो है ये सिर्फ इतने एरिया के लिए काम कर रहा है, बाकी एरिया के लिए नहीं काम कर रहा. उसके लिए फिर ये लगानी पड़ेगी, वो हम करते नहीं, हमें जरूरत नहीं. क्योंकि जायरो कंपास जो हमारा काम करता है वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्शंस पे काम करता है. इसीलिए जब सी खराब था, ज्यादा डिफ्लेक्शंस होने लगी, इस रेंज में पहुंच गया तो एलिमेंट वगैरह टूटने लगे, गड़बड़ होने लगी. सही चल रहा है क्लास? यस सर. टाइम हो गया 3 मिनट ऊपर. अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बात करेंगे. वी विल सी बोथ ऑफ दीज. हाँ जी, जब अगली क्लास में आएंगे तो वी विल सी both of these actions together. We will do an experiment and we'll try to explain what is the observation. Are we seeing rigidity? Are we seeing precession? If it is, how, why? We'll do that in the next class. Bye-bye.